तो आज हमारा जो वेबिनार है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम साद इलाही है। आई एम बेस्ड इन मिशिगन। ये हमारा मंथली वेबिनार होता है। तो आज हमारे जो इसमें गेस्ट हैं वो हैं हसन खान साहब। हसन इज सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ जिप टेक्नोलॉजीज, जो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। So just quick introduction of Hassan, and then I'll turn it over to you, Hassan. Hassan lived in California for quite a while, worked there for a number of years at Philips, Microsoft, eBay, and then decided to move to Pakistan to work on this venture to introduce electric motorcycles developed in Pakistan with swappable batteries. So this is something that Hassan has been doing for some time, and I think it was about a year ago, Hassan, that you gave us an update on your project here at this webinar. It's been a year, so we were interested in learning and hearing more about the progress you have made and the experience you've had so far. I believe you've been doing some field Hello. trials now, so it'd be really Hello. interesting to learn, how your experience has been so far and where you see things headed in the future on this. So with that, Hassan, I'll turn it over to you, and it's floor is yours. We'll have some time for Q&A after your presentation, and we will try to finish about 5 minutes before the hour, so that we have time to prepare for class, which starts at 8 p.m. Pakistan time. So with that, Hassan, I'll turn it over to you. Ji, Assalamu alaikum. Thank you for inviting me here. It is always a pleasure. And I would like this session to be interactive. Let me start with asking question, what do we people want to learn from this session so that I can customize the presentation accordingly. Any thoughts, anyone? What do you want to get out of this session today? मैं आपको अपना बता देता हूँ हसन। मेरे मेरे ज़हन में जो चीज़ है ना, for me swappable batteries is a really good solution for Pakistan for electric motorcycles, and I'm really interested in learning about how how your field trials are going, and what your experience has been so far as you are developing this and are introducing this in Pakistan. So that's what my main interest is. Sorry. No worries. दिस इज अजमल अंसारी। अगर आप जो है थोड़ा सा उसके बारे में फंडिंग के बारे में कुछ बता सकें, क्योंकि अच्छा। आपने दो तीन राउंड फंडिंग के भी किए हैं, तो व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपको फेस हुए और आपने कैसे ओवरकम किए? बहुत शुक्रिया। जरूर। Anybody else? जी, दिस इज इरफान जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि स्वैपेबल बैटरीज के हवाले से आपका सप्लाई चेन का क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से होगा, कहाँ से शुरू होगा, कितना स्प्रेड अप होगा, और इसकी अवेलेबिलिटी किस तरीके से इंश्योर होगी, और इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको आप कैसे काउंटर करेंगे। आई वुड लाइक टू सी के आपका एक क्या प्लान है, आप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाकिस्तान में। थैंक यू। सही। Awesome. जरूर। So we'll give one more person a chance to speak on what they want to get out, but so far I think I got a good idea. चलो सही है। Let's get going then. Yes. So um, everybody can see my screen, I hope. Yes, I can see it. Yeah. All right, cool. So what you see in this picture is, I already shared last time as well, but this is our swappable station and our bike, which is called Zoom 2000. It is designed primarily for delivery riders. What we are doing is we're entering the market
to that segment of the market which needs need to switch to electric mobility faster, or it's more feasible for them to do because they travel a lot. The more you travel on electric, the more feasible it becomes for you. So that was the uh, business strategy, that we don't want to offer something to the masses yet, which we will, inshallah, eventually, because that's our mission, to provide a solution for mass market. But in order to provide that, we know that we are the very first, if not the first, indigenous mobility solution developer in Pakistan. So we will face challenges in terms of technology development and its deployment. So we wanted to start in a relatively controlled fashion to B2B. And there are lots of businesses in Pakistan who are running a fleet of delivery riders. So that's why we entered the market with them. Let me switch to the next screen. So far, we have 11 months of customer operations. Our bikes have traveled 120,000 kilometers, which means we have roughly done a savings of 3,000 liters of petrol, um, and which is based on this simple formula that most people who are running the delivery riders type bikes, which is Chinese style CD70s, get an average of 40 kilometer per liter. So if you just simply divide 40 by this number, you get 3,000. And there's a calculator online which enables you to estimate how much carbon emissions, equivalent CO2 savings we have done as a result of not running these kilometers on a petrol bike. So the number comes out to around 10 metric tons. And we have seen different savings, 15 to 25%, depending on the deal we have done with the business or individual. Because we have also tested this solution on, for example, food panda riders. And we wanted to really learn, are we giving them any savings? And we found around 23 to 27% savings were given to a couple of riders who rode our bike for about 2 weeks. And rider NPS is Net Promoter Score. If people are not familiar with it, let me quickly go over it. It is essentially a method of understanding your customer. Are they recommending your product to others? And it starts with a very simple question, which is, hey, on a scale of 0 to 10, would you recommend this to others? So we have had our share of uh, issues, and but the score of 39 is pretty good. If you think of iPhone, a score of 70, then you can imagine that 39 is a very good start. And we are very proud of the fact that we have been able to satisfy our customers in such a way, initially at least, and we now want to improve the score going forward. That there are many of them want to recommend the solution to others. So um, bike successfully also handled a historic rainy season, meaning one of the riders actually on a recorded video said, while all the other bikes were stopped in the rain and cars were stopped in the rain, he was still able to ride our bike, which was very, which was the music to our ears. So far, this is our journey in terms of customer usage. And who are the customers? Primarily at this point, Chukhtai Lab, which we had a launch with them in May. They are in blue in the screen. You see their riders. And then we have TCS in Lahore. And
The red ones are TCS riders. But we also had, like I said, we did pilot with a trial with Food Panda riders as well, which was essentially we gave bikes to 2 riders for 2 weeks and we measured their savings. So what do we have? We we have a comprehensive solution, meaning not only these bikes are electric, they are also built with advanced telematics system where anybody can look at where the bike is at the moment, and if the bike had an accident, we can tell that. We also basically 1 minute refueling through these swappable battery system, which is good. And the entire software stack, which enables fleet operators and rider to manage uh, their bikes. Now, I will not go into a lot of detail of the software yet, but suffice it to say, in it is evolving over time. Riders are able to use the map to locate their bikes, and if it is stolen, they can see where the bike is going because there is built-in tracking system in the bike. And similarly, fleet owners like Lab and TCS are able to also see where multiple of their bikes are at any given moment. One of the challenges in battery swapping solution is heavy capital expenditure and our own operational cost, which is we have basically projected to become cash flow positive in 1 year. But it depends how many bikes we bring to the road. What we have seen is in our projections that if we bring 1,600 bikes on the road and then stop here for a moment, then we can become operationally uh, profitable as a business. And if we further expand, run bikes, then at a rate which eventually get us to a good percentage of the um, market share, then the profitability will come around 4th year of operation. Now, in terms of comparison, traditional bikes are with the battery inside them around 1.5 x higher, meaning 50% more than per equivalent gasoline bike. So because we are not selling the battery, we are able to bring the price down to equivalent gasoline bike. Is there any question? All right. So in terms of our solutions viability, what we have found so far that people like it, especially riders don't have time. They are on a tight time schedule, and 1 minute swap has really something that they want if they want to switch to electric at this moment. And we are currently hampered by the fact that we don't have many swap station, and that's the plan. And that's in terms of somebody asked about the supply chain. In terms of uh, building the network, we have targeted to produce or install around 60 of these stations only in Lahore in the next 12 months. So far, we have 2, and in the coming months, you will see more of these battery swap station pop up, but only in Lahore for now. And supply chain wise, battery cells are coming from China. We have these are lithium iron phosphate cells.
The price of these cells have gone down, which is the good news. And we do see a healthy pipeline for these cells. We build the battery pack ourselves. So we do import a few other material from China, apart from cells, which make up the battery, for example, BMS, and some of the connector related components are also sourced from China. And so far, we have been able to open an LC, which most businesses were having trouble with opening. I think government has relaxed some restrictions there, so we just made our first bulk order to China, and we expect some ETA for that is October, and once that happens, then we'll be producing at least 100 bikes more, and then um, batches of 100. We will be fully planning to put about around 1,000 bikes in the next 12 months, supported by 60, at least 60 swap stations. Hassan, So, you want to take one, questions during your presentation? You want to wait until the end? sorry, your audio broke. Gee, Hassan, this is Saad. I was just saying, do you want to take questions during your presentation, or you want to wait until the end? Yeah, I can take questions here. Yeah, there was a question in chat by Ali Yusuf. He was asking, how do you monitor battery health? Right. So, because we have telematics in our bike, we call it telematic control unit, and which is connected to 4G. What we do is we collect the battery health data from the field and send it back to our backend software. We do have granular monitoring, meaning we receive cell level data, means what is the voltage of every cell at any given time. Um, we get that data every 10 seconds. So we are able to collect a lot of data through which we're able to understand if one or few cells are off, or if the battery is overall not doing well. And there has been a situation where we found two batteries at least. Uh, the supplier was also surprised that how come this battery is not behaving well like all others, and we were scratching our heads as well why. It was not giving the right range, and we had to send it back to the supplier, and they are good on their promise where they send us cells, new cells for free, because it's their fault that those cells were not working as they promised. So we do have good monitoring, like every 10 seconds we get data from our, not only from the kiosk, but also from our bikes which are on the road. Does that answer your question? I have one follow-up question. The voltage, so primarily you're using voltage measurement as the criteria for state of health, correct? There are, I think this area is done by our head of R&D, who used to be head of energy, and there are many things we read from the battery. I don't have all of those metrics at the top of my head. Sure, that's fine. That's fine. So you're yes, there is something. There is state of change there. There's other things which whatever we could collect, we are collecting because it's really useful to know as much we could know. And I have a follow-up, another question. In your slide that you're sharing, on the left side, there are nodes. Can you clarify the first node that is there? Maybe first and second nodes, because I think there may be some. Oh, I see. Okay. So I got it now. I think I was reading incorrectly. Oh, okay. Thank you. Okay. No worries. Am I
Actually, my slide deck has gone away because my internet. Let me go back. Yeah, your slide, we can't see your Okay. slide anymore. Yeah. Yeah, my laptop lost connectivity because I am connected through the hotspot of the phone for some reason. Okay. Let me bring it back, please. Just a second. Okay. Yeah, while you're working on that, Hassan, I have one question about the modules that you use in your swappable stations. Okay, let's see now. Join meeting. Sorry, let me join again. I don't know why it's asking me to sign in one more time. We can see you again. So it says host disabled participant screen sharing. I don't know why you guys are आपको disabled. दोबारा से मेरे ख्याल में वो देने पड़ेंगे राइट्स हसनैन आप हैं अभी कॉल में अच्छा I am the host so I think I can make you a co-host you should be able to share now Okay, can you see it now? जी I can see the screen now I can see your slide ठीक हो गया you're back तो एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आपकी ये सॉल्वेबल स्टेशन में जो मॉड्यूल्स हैं how much is what is the capacity of each module and how much does it weigh इसका वेट ज्यादा है वन आई थिंक 16 kg की बैटरी है और 1.8 किलोवाट आवर इसकी टोटल है 72 वोल्ट पे हम चल रहे हैं अच्छा 16 kg and 1.3 kilowatt hour की बैटरी 1.8 1.8 kilowatt hour की अच्छा जी जी and you use one module in the bike or is it two modules just one module per bike हाँ एक बाइक में ये जो Zoom 2000 है इसके अंदर अभी हमने स्पेस सिर्फ एक ही रखी हुई है तो we're also planning to have another sporty design module bike which has a capacity to hold two of these अच्छा batteries. ठीक ठीक It's good in a prototype form right now. Zoom 2000 is in production अच्छा form. अच्छा very good thank you for that So the right. Any other question? Umar has his hand raised Umar you have a question Gee, like you mentioned, there was an issue with the battery, right? So when you sent it back to the supplier, did you ever get a feedback or what was wrong? Sorry, your audio broke a little. Do I ever get feedback from who? From the supplier Riders? with the batteries that you returned, right? The ones that had some issues. Right. Uh, well, they accepted it because we were able to show them very detailed data of what the battery is doing. So far, I haven't seen any pushback from our supplier side. So we received actually a pack of batteries successfully once, and recently there was more battery which showed some problem, not exactly the range that was promised. So we get out a good range from that battery, and we have also reported that, and hopefully that will be reimbursed to ourselves again. Okay. So you're also collecting warranty data as far as like or field data that the vehicles that are in the field right now. So yes, your
It's breaking for me. Is Umar fine for everybody else? जी मुझे तो आ रही है आवाज उमर की। मैं टाइप कर देता हूँ think. अच्छा आप हाँ टाइप कर ठीक ठीक है चलिए you should continue Hassan. अच्छा I also see a question okay I also see a question how many cycles the batteries are designed at अभी तक हमें जो ये A grade cells कहते हैं और this promised us कि 4000 cycles होंगी इसकी we have yet to hit that to actually test okay question आपने टाइप कर दी उमर? अच्छा चलिए एक और as the question comes in I will answer that जी और भी कुछ questions in chat में Hassan what is the maximum charging and discharging capacity of the battery I mean charging capacity discharging capacity अच्छा in terms of हाँ ये 50 ampere से थोड़ा सा I think 50 ampere का current we can discharge but we mostly operate it at 25 have you experienced any change in the loss of the heat based on batteries sensitive to extreme हाँ surprisingly heat वाला system अभी हमें मतलब we haven't seen any degradation based on the heat in the last summer EV bikes and cars only one answer we hear maintenance cost is very high how can EV survive in this country okay हाँ आई थिंक ईवी कॉस्ट जो हाई है वो इसलिए है कि उसके पार्ट्स क्योंकि ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं तो इस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाती है व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बिल्डिंग a lot of these parts ourselves locally sourced और ब्रेक शूज हैं फॉर एग्जांपल which is what wears out very quickly and the most commonly we have heard people complain that EV बाइक्स के ब्रेक शूज बड़े महंगे हैं क्योंकि वो भी चाइना से आते हैं जो बाइक्स typically import की जाती है what we have sourced locally so I think in our case maintenance costs should go down at least for these parts cells क्योंकि बाहर से आते हैं हमारी जो मोटर कंट्रोलर है मोटर है वो बाहर से आते हैं तो यस उनकी कॉस्ट अभी थोड़ी सी जब तक वो लोकली प्रोड्यूस नहीं होते तब तक उनकी कॉस्ट हाई पे रहेगी बट इट्स द सेम थिंग कि इंजन महंगा ही होता तो मोटर भी इस केस में महंगी है you know अगर there's no proper mechanic for EV yes I think जैसे जैसे लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे मैकेनिक्स भी अपने स्किल को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे और इंस्टीट्यूट्स लाइक यू गाइस and maybe other will pop up inshallah to train people in this area so you have to take a step you have to start somewhere and then should follow so that's our philosophy at this point okay so this is just a quick summary we have a battery subscription model so you not only while you don't pay for the battery upfront you do pay battery rent and then and it varies with the mileage that or kilometers you travel but despite all of this you still get to enjoy if you are say a food panda rider you still enjoy um, we have seen an average of 25% saving
This is just a quick summary of telematics control unit. के मैप में आपको अपनी बाइक नजर आ जाएगी. Also see के swap stations कहाँ है, and you can go there. अगर बाइक गिरती है क्योंकि उसमें एक्सेलरोमीटर भी लगा हुआ है, gyro sensor भी लगा हुआ है, so we're able to detect the falls. My son actually had a fall. He's 18. He just turned 18, so he was riding it to gym, and he came back with lots of bruises and blood on his face, and we were a little horrified. But later he was fine. But later I looked at the data and I could see what was his speed at the time the bike fell, uh, how long the bike remained down. It was like 5 minutes, bike was down, and then he picked the bike up after 5 minutes, and then he stayed there for 1 more minute before he rode back to home. So I'm pretty confident that the data we're collecting is actually giving meaningful insights into what's happening in case of an accident. So, and that's all because of the telematics control unit. Similarly, fleet operators on a map, as you can see in this picture, look at all the bikes they own. So one more thing I wanted to quickly cover is if you are an indigenous OEM, meaning you are running a company which wants to build electric bikes for Pakistan environment, then you can down the cost of your bike if you. Oh, there's a connectivity loss again. Can you guys hear me? मेरी आवाज I आ have रही? a question, जी please. आवाज आ रही है आपकी, लेकिन we lost your हाँ slide again. हाँ, तो मैं स्लाइड में बेसिकली ये कह रहा हूँ कि वो जो सेविंग्स हम दिखा रहे हैं जिप के आपकी जो बाइक की कॉस्ट है वो गैसोलीन बाइक के लेवल पर आ सकती है अगर आप बैटरी को उसमें ना शामिल करें. So if you are an OEM and you want to build bikes in Pakistan, you can, and if you decide to build bikes for our battery, for which you'll have to design your bike to accommodate our battery. If you do that, then you can right there save 30 to 40% of the cost. And for us, it's a opportunity to serve refueling, recurring revenue for us, and for you, you get to reduce the cost of your bike and bring it to a very competitive level in the market. So that's the main message in that slide. And after that, I think this it was the last slide. So coming back to the question of fundraising challenges. If there's no other question, I can tackle that, or जी, there are Abdullah actually should few some other technical. जी few people that have जी आप अगर raised. आप अच्छा साहब अगर आप मुझे आप permit करेंगे मुझे question का? एक तो असलम साहब हैं, and then अफजल सईद साहब. So why don't you go ahead, असलम साहब, and then we will go to Okay, अफजल sir. साहब. जी, Okay. go ahead, Thank you असलम. very जी much, sir. Thank you very much. I have three questions. One is जी that what is indigenous of the manufacturing, assembling, whatsoever in a battery? This is number one. Number two, कि आप जो चार्ज करते हैं, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बैटरी पे किया, आप किसी ने बाइक आपसे परचेज कर लिया, बट बाइक के बाद जो रिचार्जिंग है बैटरी का, उसका चार्ज पर किलोमीटर या पर चार्ज जो है कंप्लीट, उसका क्या प्राइस होगा? तो दूसरी बात, ताकि उसका अंदाजा हो कि पर किलोमीटर से क्या कॉस्ट आ रही है. नंबर थ्री यह है कि आपने कहा कि यू हैव अबाउट 130,000 किलोमीटर, कुछ इस तरह से जो फिगर दी गई है. 120 इतनी फिगर्स के बाद, जी 120, इतनी फिगर, इतना ट्रेवल के बाद सेल जो है उसके अंदर जब आप उसको ब्लूटूथ के साथ स्कैन करते हैं, लाइक इफ यू हैव जेके या एनी अदर मॉडल जिसके साथ आप एक्टिव बीएमएस लगाते हैं, वो आपको तीन चीजें शो करता है, चार चीजें ज्यादा शो करता है. एक आपको वोल्टेज देता है, एक आपको टेम्परेचर ऑफ द सेल देता है.
सिस्टम का। नंबर 3 वो आपको देता है कि सेल की रेजिस्टेंस कितनी है, और जब आपने डे 1 से सेल नया लगाया उसकी एक रेजिस्टेंस है, और जब आपने 120,000 किलोमीटर चला लिया तो उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस क्या रही, और जो आपने सेल फॉल्टी कहा कि वो हमें वापस भेजे हैं, तो क्या उनकी रेजिस्टेंस क्या रही, यानी एक्चुअल जो नए सेल की क्या रेजिस्टेंस थी, या फॉल्टी हुआ की क्या रेजिस्टेंस, ताकि एग्जैक्टली इससे असेस हो सकता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये 3 मेजर मेरे क्वेश्चन है, यानी 1 कि आपका इसमें इंडिजिनस क्या है, और दूसरा यह है कि आप पर किलोमीटर के हिसाब से क्या क्या चार्ज पड़ेगा, और तीसरा यह कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या कितनी ड्रॉप हुई। अच्छा, थैंक यू फॉर समराइजिंग, क्योंकि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी उस वक्त, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे आ गया। और अगर नहीं आएगा आई विल आस्क यू अगेन कि क्वेश्चन क्या है। इंडिजिनस पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडिजिनस इन द बाइक, राइट, एंड द इंटायर सोल्यूशन। तो उसमें ये है कि हमारा फ्रेम हमारा अपना है, वी हैव designed the entire big frame in alignment with the requirement of the rider, because we are saying कि हम पहले डिलीवरी राइडर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, और उसमें एक और जो हमारी थॉट थी ये कि वुमेन शुड आल्सो बी एबल टू राइड, तो इस स्टेप अप डिजाइन है फ्रेम का। आमना उसके कौन अलावा सा है सर? उस बाइक के आमना। आवाज आ रही, जी आ रही है आपकी आवाज हसन। कुछ कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी। तो फ्रेम अपना है, उस हिसाब से बहुत सारे, जब फ्रेम आप चेंज कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको फिर अपने हिसाब से बनानी पड़ती हैं। बैटरी कंपार्टमेंट भी, और स्टोरेज बॉक्सेस भी, हैंडल वगैरह भी हम खुद ही बना रहे हैं, और जो टेल लाइट है वो भी, और बाकी इंडिकेटर्स वगैरह हम लोकली परचेज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़ी तेज़ी से टूट सकते हैं एक्सीडेंट्स के केस में। तो when we say indigenous, what we really mean is कि हम पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा मिल सकती हैं उनके थ्रू हम बाइक बनाए, ताकि इवेंचुअली यहाँ पे नो हाउ भी बढ़ जाए, और ये कि अ, उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी अच्छी हो जाए, जैसे कि पेट्रोल बाइक की है टुडे। तो विच इज़ द रीज़न बाइक्स आर successful at this point. So if we just keep importing, it won't happen. Adoption will not increase. So does that answer your question about indigenous? हाँ, इसमें ये कि जो बैटरी स्वैप स्टेशन है वो completely locally designed है। उसमें भी कुछ पार्ट्स चाइना से आते हैं, लाइक चार्जर आता है चाइना से प्राइमरली, और कुछ ESP32 की चिप्स वगैरह आती हैं, और सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी जो बैटरी बनाई है उसका, उसके अंदर आपका इंडिजिनस क्या है। मैं बाकी बाइक के हाँ, बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक ओके, पहला क्वेश्चन ये था। वो हाँ, बताइए कि बैटरी जो टोटल आपने डेवलप की है उसके अंदर आपका क्या पार्ट है, आपका क्या रोल है, और उसके राइट, बाद फिर बाकी 2 चीजें मैंने कहा कि कॉस्ट क्या पड़ती है एकदम आई चार्ज की बैटरी की, ताकि आदमी को किलोमीटर का अंदाजा हो कि एक बैटरी कितने किलोमीटर चलेगी और आप क्या कॉस्ट करें। जो बैटरी की कॉस्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो इस रफली इस तरह है कि 4 रुपए का किलोमीटर आपको पड़ जाएगा। अगर आप घर में चार्ज करते हैं और बड़ी अच्छी बाइक है आपकी, तो 2 रुपए का किलोमीटर पड़ता है। अगर आप पेट्रोल पे चल रहे हैं तो रफ कैलकुलेशन ये है कि बहुत अच्छी बाइक है CD17 नई, तो वो आपको 6 रुपए की किलोमीटर की पड़ती है। तो हम घर वाली आपको किलोमीटर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन वी आर स्टिल एबल टू गिव अ गुड सेविंग टू यू। तो ये वो हो गया इंडिजिनस। बैटरी के अंदर ये है कि पूरा बैटरी पैक हमारा खुद डिजाइन है, हम सिर्फ सेल्स और BMS लेते हैं बाहर से। कुछ कंपोनेंट्स और भी हैं, जैसे कुछ अ, वो होते हैं हमारे कनेक्टर के कुछ पिंस हैं जो कि बाहर से आती हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम पैक है उसका डिजाइन, उसमें से कैसे हीट डिसिपेशन होनी है, हैंडल किस तरह से उसको कवर करता है, और वाटर प्रूफिंग जो उसके अंदर है बैटरी के अंदर, वो सारे कुछ और लोकली डिजाइन बाय आवर टीम। डज दैट आंसर योर इंडिजिनस क्वेश्चन?
आप तो सब में स्टैंड गो अहेड, मुझे वो थर्ड जो रेजिस्टेंस वाला वो बताइए, उसका जवाब क्या है आपके पास? अगेन आवाज ब्रेक हो गई। थर्ड क्या चीज? थर्ड क्वेश्चन मेरा यह था कि जो सेल की रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब आप हाँ सेल को, आप बैटरी को, पैक को आप स्कैन करते हैं थ्रू ब्लूटूथ, तो उसके ऊपर आपको डाटा मिलता है, टेम्परेचर, वोल्टेज, वोल्टेज, उसकी सेल हर इंडिविजुअल की रेजिस्टेंस मिलती है, तो उसकी नए की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, और जब आप जो फॉल्टी सेल होगा उसकी तो क्या रेजिस्टेंस है, इसके बारे में कुछ जी, शेयर वो कर सकें? सॉरी, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि वो मुझे नहीं पता। दिस इज डन बाय आवर टीम, हेड ऑफ R&D नोज डिटेल्स इस सेल लेवल की, वो मेरे पास नहीं है इस वक्त। अच्छा, हाउ यू हैंडल दिस इफ द टेम्परेचर गोज हाई ऑफ द बैटरी, क्योंकि आपके पास बैटरी का जो मुझे समझ आई है कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50 सेल्सियस से ऊपर भी टेम्परेचर बहुत सारी जगह पे चला जाता है, तो जब आप बाइक को दिन में राइड कर रहे हैं और आपके पास 45 डिग्री प्लस है और इसके अंदर भी टेम्परेचर जनरेट होगा, इसको टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या अरेंजमेंट बैटरी के अंदर? थैंक यू। प्राइमरीली तो एयर कूलिंग ही है, और इसके अंदर हमने कोई स्पेशल कूलिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ इस वक्त। और कुछ इंस्टेंसेस पे मतलब हीट डिसिपेट होती है थ्रू, जैसे हमने बताया कि उनकी जो वॉल्स हैं वो एल्यूमिनियम डिजाइंड हैं, और जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसी के थ्रू हीट डिसिपेट होती है प्राइमरीली। लेकिन इसके अलावा देर इज नो सिस्टम फॉर हीट डिसिपेशन। वी हैव सॉरी फॉर सीन। इंटरफेरेंस, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, मुझे एक चीज समझ नहीं, क्योंकि आपका कंटेनर है जो आपकी बाइक के अंदर सीट उठा के किसी लोकेशन में डाला जाता है, और वहां पर किसी जगह पर भी एयर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, तो ये आपका जो कंटेनर है वो ऑलरेडी जो बाइक के अंदर कंटेनर बना हुआ उसके अंदर आप इंसर्ट करते हैं और उसको प्लग जी करते हैं, तो लिहाजा जो ओपन एयर है वो तो उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं होती है, तो आपकी बॉडी में अगर हीट जनरेट होती है बैटरी की बॉडी में, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे ट्रांसफर होगी, और एटमॉस्फेयर के अंदर आने के लिए तो उसको कोई एक्सेस होना चाहिए ना, एक्सेस तो नहीं उसमें। जी, वो थ्रू प्राइमरीली थ्रू एल्यूमिनियम ही हो रही है। और और जो हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है वो बेसिकली हमने इस्तेमाल किया हुआ है बैटरी पैक्स के अंदर, उनके जो कनेक्टर के करीब है। सो फार वी हैव सीन टेम्परेचर राइजिंग अप टू 75 फ़ारेनहाइट, और उसके बाद वो थ्रू वॉल्स डिसिपेशन होती है, उसके बाद वो दे कम बैक टू नॉर्मल। तो अभी तक जो एक्सट्रीम केसेस में टेम्परेचर देखा गया है वो 75, नहीं सेल्सियस, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट नहीं, 75 तो क्या सेल्सियस। इसका, तो अगर हाई टेम्परेचर कितने पे जाए तो ऑटोमेटिकली बीएमएस कट करता है या कट ऑफ नहीं करता है, व्हाट इज सेफ्टी जो है अच्छा, इसकी? असलम साहब, आई नो यू हैव क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस, माशाल्लाह आपका खुद अपना खासा एक्सपीरियंस है ईवीज में. We जी have जी। few other questions as well. I think we may be getting a little too deep into the technical stuff. तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें ये कि हम maybe take a few other questions, and then if we have time, which I don't think we will, maybe ओके। we can arrange another webinar some other time later to get more हाँ, बस into it. जस्ट टू समराइज, मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल डेटा नहीं है, मेरे टीम के पास है। जी जी. तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। नहीं, ठीक है. Well, that's okay. I think the purpose of the webinar was, for more general discussion, not to go too deep into the technical stuff here. हम्म। So that's fine. We have a couple of other people that have their hands raised. Afzal Saab, Afzal Saeed, and then Roman Zafar. Afzal Saab, please go ahead. Afzal Saab, if you have a question, please go ahead. I think Afzal Saab may not be able to speak. You're on mute, Afzal Saab. If you're saying anything, we can't hear you. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि फंड रेजिंग के चैलेंज के बारे में। आई कैन जी. गो दैट राइट नाउ। तो यस, इट हैज बीन वेरी चैलेंजिंग
पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों ने हाथ रोक लिया था, एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल टू रेज फ्रॉम source which has already been doing some investment in Pakistan and they are still big on Pakistan. वो शुरू partners हैं. They initially they saw us back in 22 uh, when हम उस टाइम पर हमने 1.2 million रेज किए थे सीड फंडिंग में, तो थ्रू इंडस वैली. तो they considered us at that point and then passed on. They said it's too risky at this point. You guys only have a prototype, nothing much. So उसके बाद they were watching the situation, who is doing well in Pakistan environment. So we heard from them again in 2023 जून में, और उसके बाद फिर अक्टूबर में they came back and showed interest in investing, but even then there's too much um, questions, too many things, and we did pitches to a lot of other investors जिन्होंने pass on कर दिया कि नहीं अभी नहीं, environment काफी risky है पाकिस्तान का. तो but we we brought them to Pakistan, शुरू partners, उन्होंने फैक्ट्री आके देखी अक्टूबर टाइम फ्रेम में लाहौर में, सुंदर में, and then they went back and finally actually मई में जाके 2024 के they finally made their move. तो ओवरऑल बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स को हमने अप्रोच किया, इट वाज डिफिकल्ट टू गेट. वो यही यही होता था कि ऐसा नहीं है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, ये मार्केट स्ट्रांग नहीं है. मार्केट 27 million vehicles on the road, big enough market, एंड टीम भी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो था उसको ही लोग यूज कर रहे थे. कई लोग बहुत करीब आ गए थे इन्वेस्टमेंट के, फिर लास्ट मिनट पे उन्होंने डिसाइड किया कि अभी नहीं. तो yes, that's the entire story. But if anybody have any further question on this, happy to answer. एक और another person has their hand raised. Roman Zafar. Roman, अगर आप question पूछना चाहें तो go ahead. We only have like 3 more minutes left, and then we have to switch to another call. Roman, go ahead with your question if you have one. Yeah, Afzal Saab, if you have a question, you have your hand raised. Yeah, we can't hear them. Anybody else have a question? Please go ahead, and then we'll wrap up after this one. जी, मेरा एक सवाल है. आपने अपने एक स्लाइड में लिखा था कि वाटर सीलिंग के बारे में लिखा था. मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, उसका लफ्ज़ आपने क्या लिखा, लेकिन क्या उसकी कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं आप? आईपी रेटिंग जो आप कह रहे हैं कि सील किया हुआ है आपने, एक सवाल ये है, और ये दोनों बैटरी के लिए भी और मोटर के लिए भी. दूसरा सवाल जो है वो ये है कि आपके जो बैटरीज हैं स्वैपेबल हैं, उसमें आपको थेफ्ट का कोई इशू आया? शुक्रिया. अच्छा, जो मोटर है वो IP65 की है, और जो बैटरी पैक है वो भी IP65 लेवल पे ही है. बट हमने इसको डिप करके भी देखा है, वो 4-5 मिनट निकाल लेता है अगर वो पूरी की पूरी बैटरी पानी में डिप हो जाए. बट और उसमें थोड़ी सी नमी अंदर हमें नजर आई है आते हुए. तो अभी हम उसको IP67 क्लेम नहीं कर पा रहे, लेकिन IP65 लेवल हम अभी क्या इसमें आपके बैटरी टर्मिनल्स भी शामिल हैं जो आप सीलिंग की बात कर रहे हैं, या बैटरी कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? एक तो बैटरी इटसेल्फ है उसकी, अगर हम बैटरी को पानी में डालें तो अंदर नहीं जाता 4 मिनट तक. लेकिन उसमें बैटरी के टर्मिनल शामिल, इसमें बैटरी के टर्मिनल शामिल है क्या? जी बैटरी के टर्मिनल एक्सपोज होते हैं ना, क्योंकि आमतौर पे जी तो जी बिल्कुल वो एक्सपोज है, बिल्कुल वो शामिल है, क्योंकि सारी बैटरी हमने पानी में डाली.
फिर बैटरी कंटेनर है जो बाइक के अंदर है, वो IP65 लेवल तक का है। अभी हम क्लेम नहीं कर रहे ये सारी चीजें, अभी तो हम ये कहते हैं कि आप पानी में चला सकते हैं, विच वी हैव एक्चुअली सीन पीपल डू इट। तो ये जो लेवल्स हैं इनकी तो एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है ना, बल्कि वो चैम्बर में आप डस्ट डालें और फिर टेस्ट करें किसी थर्ड। पाकिस्तान में वो चैम्बर्स हमें अभी नजर नहीं आए किसके पास है कि हम डस्ट को भी टेस्ट कर लें, पानी को हम खुद कर पा रहे हैं। तो मेरा पास इसलिए आप, जी हेलो। Continue, Hassan Saab. We only have a minute left, and then we have to wrap up. अच्छा, तो एक और आपने सवाल पूछा था बैटरी से रिलेटेड। एक तो रेटिंग होगी और दूसरा क्या था? थेफ्ट उसे चोरी थेफ्ट, का हाँ। चोरी या उसके डैमेज करने का, क्योंकि स्वैपेबल हाँ, बैटरी है। अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम पब्लिक तो नहीं गए, ये एक अच्छा कंट्रोल्ड अच्छा, सही एनवायरनमेंट में चल सही रही है। सही सही, ठीक है। ये ये मतलब TCS के हेड ऑफिस जो लाहौर है वहाँ पे आपको नजर आएगा। तो वो कॉर्डन ऑफ एरिया है, मतलब गार्ड बैठा होता है 24/7। और इसी तरह जो फाइल है, तो यस, दैट्स अ बैटरी चैलेंज। बैटरी की ओनरशिप आपकी रहती है या वो ट्रांसफर हो जाती है? नहीं, वो बैटरी की ओनरशिप हमारी है, क्योंकि बैटरी की हेल्थ, बैटरी को रिसाइकल करना, वो सारा कुछ हम नहीं चाह रहे कि एक यूजर के हेडेक बने। और आई थिंक इट्स इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर, क्योंकि सही, यूजर को तो सिर्फ एनर्जी चाहिए थी, उसको हम बैटरी दबा के क्या करते। ठीक, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया. Thank you so much. And Hassan, I think we'll have to wrap up here. ओके, We have to start the class in about 3 minutes. So, बहुत ऑलराइट, शुक्रिया Hassan once again for joining us, taking the time. I'm sure you're very busy, but you took the time to go through this with us, and I really appreciate that. So inshallah, वेलकम। in a little while, we'll ask you to come back and tell us, about how your journey is progressing and what further challenges and opportunities you see. So inshallah, we'll have you back some इंशाल्लाह, later. इंशाल्लाह। Okay. बहुत So शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ अल्लाह जी. हाफिज। And for those who joined, आप सबका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का आज. And we will make the recording available. तो वो आपके साथ शेयर कर लेंगे recording. And with that, thanks again everybody for joining. Inshallah, next webinar जो है हमारा वो अक्टूबर में होगा. And that'll be on October 5th. That's a Saturday. So inshallah we'll see you all then. Okay जी, अल्लाह हाफिज.